Hello, everybody. Welcome back to the session of Poststructuralism. And this is the second one on Poststructuralism, doing PK Nayar book, studying page by page. And as you can see on my back, today we are going to talk about these deconstructionists. This one is Barthes, this one is Derrida. And both are smoking. Okay, let's go. So we have to start with the the deconstructive turn एंड रोना बार्थ्स एंड डेरिडा. ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन किया था और हमने मिशेल फूको की बात की थी अबाउट पावर, नॉलेज, ये सब स्ट्रगल. While Foucault's work involved detailing the structures of power, so he was talking about the structures of power, right? And unka discourses, Barthes' later writings began to make the first moves in rebelling against structuralist reading of text. Initially, Roland Barthes was doing a structuralist analysis of the text, but later on he moved away from that and he started rebelling against it. And he began by suggesting a different view of the text कि यार हम लोग ना टेक्स्ट को अभी तक जो देख रहे थे वो बहुत लिमिटिंग था और अब हम लोग उसको एक डिफरेंट तरह से देखेंगे. तो उन्होंने कहा था टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली. तो टू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रोलांड बार्थ्स, रीडरली टेक्स्ट एंड राइटरली टेक्स्ट. रीडरली टेक्स्ट क्या होता है? रीड ओनली टाइप, जिसमें एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, ऑथर ने सारी चीजें दी हुई हैं, आपको बस पढ़ना है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें. A readerly text was one that left the reader with nothing to do. It explained explicitly, described everything. It controlled meaning. So सारा का सारा मीनिंग ऑथर ने कंट्रोल करके रखा है और रीडर सिर्फ एक पैसिव रेसिपिएंट है मीनिंग का. अगर फिल्म्स का एग्जांपल लें तो ऐसी फिल्म्स जो एक्शन कॉमेडीज होती हैं, गोलमाल टाइप या रोहित शेट्टी की फिल्म्स टाइप, यू जस्ट सिटिंग एंड एंजॉइंग द फिल्म, यू नॉट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. रीडरली फिल्म्स एंड द रीडर इज अ मियर रेसिपिएंट ऑफ मीनिंग. ऑन द अदर हैंड वी हैव राइटरली टेक्स्ट. राइटरली टेक्स्ट में आप एज अ रीडर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं इन द मीनिंग मेकिंग. ओपन एंडिंग्स होगा, है ना, बहुत सारी डीपर मीनिंग्स होंगी जिसमें आपको समझना है कि अच्छा यार ऐसे हो सकता है. So it is one where the reader had an active role to play. The text teased, hid, clues de raha hai to the reader to decode. So in other words, Barthes was proposing that meaning was not embedded within the text but within the reader who derived meaning. हम अपना अपना मीनिंग derive कर सकते हैं. कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें एंडिंग दी ही नहीं होती. इट इज लेफ्ट अप टू द रीडर टू डिसाइड कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसने ये रास्ता चूज किया होगा या ये रास्ता. मेरे लिए हो सकता है ये, किसी और के लिए वो. तो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग रास्ता, अलग अलग मीनिंग. सो जो मीनिंग है, इट इज एम्बेडेड विद इन द रीडर हु डिराइव्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्सचुअल प्रोसेस. सो एज ही पुट्स इट इन द डेथ ऑफ द ऑथर, द रीडर इज द स्पेस on which all the quotations that make up a writing are inscribed without any of them being lost. So a text's unity lies not in its origin but in its destination. कहाँ पहुंच रहा है टेक्स्ट? ओरिजिन तो कुछ भी हो सकता है. तो बात क्या सजेस्ट कर रहे हैं? that a work is a physical object that occupies shelf space and is carried in the hand. एक टेक्स्ट, एक वर्क, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है. कोई भी बुक हो, एक बुक है, ठीक है, इसको हम वर्क बोल रहे हैं. एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैरी करके लेके आए. टेक्स्ट क्या है? आपने कभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए बोला होगा ओपन योर टेक्स्ट्स या ओपन योर बुक. ओपन योर टेक्स्ट. टेक्स्ट वो तब बनता है जब आप उसको खोल रहे हो, आप उसको रीड करके अपना मीनिंग क्रिएट कर रहे हो. तो टेक्स्ट इज अ प्रोसेस इन लैंग्वेज. Text here begins to mean a series of linguistic processes that are decoded by the reader. We assume the structure of narrative negotiations between the language and the reader. एक negotiation चल रहा है. So as Barthes puts it in, एक वर्क है इनका, फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट. तो एक बुक जो है, एक वर्क से टेक्स्ट कैसे बनती है? The text is experienced only as an activity of production.
जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो उससे. In addition, Barthes sees the author as the controlling authority that prevents a work. अब अगर सारा का सारा मीनिंग ऑथर डिटरमाइन कर रहा है तो वो कंट्रोल कर रहा है एक वर्क को टेक्स्ट बनने से. then it is not a text. So as long as we assume that the author carries and owns the meaning of a poem or a novel, it will remain a work and not become a text. So Barthes writes, the explanation of a work is always sought in the man or woman who produced it. Explanation जो है वर्क का वो एक जो भी आदमी या औरत जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसमें हम ढूंढते हैं as it if it were always in the end, though the more or less transparent allegory of the fiction, the voice of a single person, the author confiding in us through, sorry. So the explanation of a work is always sought in the man or woman who produced it, as if it were always in the end, through the more or less transparent allegory of the fiction, the voice of a single person. हम लोग ढूंढते हैं ना कि अच्छा ऑथर क्या कहना चाह रहा है. So a work becomes a text जब reader refuses that authority. अच्छा मुझे नहीं पता कि कौन ऑथर क्या, मेरे लिए तो इस वर्क का मतलब ये निकल के आ रहा है. So in Barthes' famous formulation, the birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Barthes then proposed that these narrations are, by definition, endless. This is so because every text is open. अब ये कह रहे हैं कि ये जो नेगोशिएशन है ना रीडर और टेक्स्ट लैंग्वेज के बीच में, ये एंडलेस है, चलता रहता है. क्यों? क्योंकि एवरी टेक्स्ट इज ओपन. उसका कितना इंटरटेक्सचुअलिटी है, एक टेक्स्ट कितने सारे अदर वर्क्स को रेफर करता है. Therefore, एक endless series of signifiers बन जाता है that refer to other signifiers and other texts rather than point to any definite conclusive meaning. तो कोई एक ultimate meaning नहीं मिल रहा. The reader's task and pleasure is in playing with the text's endless games. ये खेली चलो आप लोग games reader का, और उसका pleasure भी यही है. Endless games of signification खेल रहे हैं. Barthes further proposed that this play is not necessarily controlled by the author. The author's center as authority, as the controller of meaning, is dead. And the meaning of a text lies somewhere in the play between the narrative and the reader. अब when the narrative जो text है और जो reader है वो दोनों आपस में जब आ रहे हैं in contact with each other, तब जाके कहीं उसके बीच में meaning है. However, जब हम post-structuralism की या deconstruction की बात कर ही रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं मीनिंग कभी अचीव होता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एंडलेस नंबर ऑफ सिग्निफायर्स हैं, एंडलेस नंबर ऑफ टेक्स्ट हैं. एक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो दूसरे टेक्स्ट की तरफ इशारा करता है, तो वहां चले जाएंगे, वो उसमें क्या है वो और दिखाएगा. एंडलेस है तो सिग्निफाइड रीच ही नहीं होता. द प्ले एंड इट्स प्लेजर अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी टेक्स्ट इज प्लूरल इन इट्स मीनिंग. अब एक मीनिंग भी नहीं हो सकता. मेरे लिए कुछ और मीनिंग है, आपके लिए कुछ और मीनिंग है. It refers to, echoes, parallels, quarrels with, reflects and borrows from other texts. So play is not rational or hierarchic but random, repeatable, differently and endless. ठीक है? तो बात्स के लिए क्या क्या पॉइंट्स है? नंबर 1, टेक्स्ट प्लूरल है. नंबर 2, टेक्स्ट ओपन है टू अदर टेक्स्ट, इंटरटेक्चुअलिटी है टेक्स्ट में. ऑथर इज डेड एंड देयरफॉर नो मोर द सोल अथॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट. द प्लेजर ऑफ अ टेक्स्ट लाई इन द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग द नैरेटिव. With these moves, Barthes has put in place a different view of textuality itself, doing for an openness and endlessness of meaning making. एक नया व्यू खोल दिया जब रोना बार्ट्स आए कि भाई मीनिंग तो है ही नहीं कुछ, एक एंडलेस सा एक चेन बन रहा है, ओपननेस है. Jacques Derrida, often associated with the movement in philosophy known as deconstruction, तो मेनली अब डीकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो मेन डीकंस्ट्रक्शनिस्ट जाक डेरिडा हैं, है ना. लेकिन हम ये भी कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन जैसे है वो ना होता अगर रोना बार्ट्स की जो ये फिलॉसफीज हैं अगर हम इनको ना देखें. So he's arguably one of the most elusive, controversial, and influential figures in Western intellectual history. His work has spanned philosophy, literature, law, political theory, and social theory.
Obsessed with the functioning of language, Derrida's mode of writing is playful, elliptical, and sometimes obscure. However, the point is that the way he makes his arguments is the argument itself, a degree of self reflexivity that is not seen in contemporary writing. तो फिर अचानक से आते हैं डेरिडा, और डेरिडा ने जब लिखते हैं तो उनकी राइटिंग अजीब, बिल्कुल अलग सबसे, सबसे कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंशियल फिगर वेस्टर्न हिस्ट्री में। तो इनके वर्क इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं लिखा है, इन्होंने फिलॉसफी, लिटरेचर, लॉ थ्योरी, सोशल थ्योरी, सब पे कुछ ना कुछ लिखा है। बेसिकली डेरिडा ऑब्सेस्ड थे कि लैंग्वेज कैसे फंक्शन करता है इस चीज से। तो डेरिडा का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत प्लेफुल है, कभी कभी समझ नहीं आता, ऐसा है। तो पॉइंट ये है दैट जब डेरिडा आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो भी अपने आप में एक आर्ग्यूमेंट की तरह लगता है। तो आप there's a degree of self reflexivity, you reflect on the language itself, और वो contemporary writing में नहीं नजर आती। So Derrida's early work built upon Saussurian notions. तो जैसे मैंने कहा था कि you can't say that he rejected Saussure, no, उनके लिए तो इन्फ्लुएंस थे वो। तो डेरिडा ने सॉस्योर के वर्क्स पे, सॉस्योर का जो थ्योरीज था लैंग्वेज पे, उस पे ही बिल्ड किया आगे, लेकिन ऑफ कोर्स उसको एक रैडिकल एक्सट्रीम में वो ले गए। डेरिडा argued that if the relation between signifier and signified is arbitrary and all language is relation, remember Saussure's two major points, signifier और signified की वो बात करते हैं और कहते हैं दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्ररी है, कि कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि हम कैट को कैट क्यों बुलाते हैं, इट्स जस्ट नेचुरल, इट्स नॉट नेचुरल, इट इज द रिपीटेड यूजेज, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि उनका जो रिलेशनशिप है, देयर इज हम मीनिंग कैसे जनरेट करते हैं, वी लुक एट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ डिफरेंस। दो पॉइंट्स थे ये सॉस्योर के, वही पॉइंट्स डेरिडा ने भी लिए और कहते हैं कि अगर ऐसा है, अगर जो रिलेशनशिप है सिग्निफायर सिग्निफाइड के बीच में वो आर्बिट्ररी है और सारी लैंग्वेज रिलेशनल है, देन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन सिग्निफायर टू अनदर। वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है ना, सारा रिलेशनल है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम लोग रीड जब कर रहे हैं, सो वी आर रीडिंग, रीडिंग इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन सिग्निफायर टू अनदर signifier. We can never come to the end of signification, because if Saussure said you understand the meaning of cat because it is different from bat, तो यहाँ पे आप cat को तो समझ रहे हो लेकिन bat भी दिमाग में आ गया, now you understand the bat because it is different from rat, तो endless, it is a movement from one signifier to another. So we never come to the end of signification and discover the meaning, because when we get to the end, we are faced not with the signified but with another signifier. End aata hi nahi hai. So every signifier refers to other words or signifiers. Let's take another example. If I ask you, if I am not a native speaker, not a native English speaker, and I ask you कि cat क्या है, what is a cat, you will try to explain to me that cat is, what will you say? You can't really explain it to me, you will just give me another word. You will say cat is an animal. I'll say what is an animal? Another signifier. Cat signifier था, मैंने आपको पूछा कि cat क्या है, अच्छा आपने कहा एनिमल है, आपने मुझे एक और वर्ड दे दिया, मुझे नहीं पता एनिमल क्या होता है, another signifier for me, no meaning is being generated here. So I ask you, what is an animal? You again think of words, four legs, not an upright stature, whatever, but these are all again signifiers coming to me, and there is no end. Meaning is just being postponed, postpone हो रहा है, और डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से टर्म आती है डिफरेंस, endless postponement, deference of meaning. We never arrive, we only travel along the path of meaning making. Thus, in order to explain the word cat, we use further terms like animal, organism, whiskers, tail, more signifiers along the chain of signification. So there is no final signified, because even that signified will consist of more words. So every signifier, argued Derrida, is made up of an absence. ये सेम कॉन्सेप्ट है जो सॉस्योर का था, जो हमने डिफरेंस की बात की थी कि मीनिंग, ये व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, द
relationship is that of difference, because we understand cat, it is different from bat, है ना, different. Derrida ने भी वही कहा कि we understand cat because bat is absent. Difference की जगह absence का word use किया है. So building on Saussures' assumption that meaning is the result of difference, cat is different from bat, hat, fat, Derrida suggests that every word carries within it the words that we are aware of being as different. ये words अपने साथ carry करते हैं, वो words जो इनसे वो different है. So every signifier is a series of differences from other signifiers. So all of those are absences that constitute this for us. Cat is produced because fat, hat, bat are absent. तो ये दो सेम ही चीजें हैं जो डेरिडा ने कही, बस ये कहा कि हाँ पोस्टपोन हो रहा है मीनिंग. तो एक इन्होंने कहा डिफरेंस इज देयर, दूसरा पोस्टपोनमेंट है. पोस्टपोनमेंट को हम डेफर होना भी कहते हैं. तो वहां से ही टर्म बनता है डिफर प्लस डेफर, डिफरेंस. So this means meaning of cat is the result of absence rather than mere presence of difference. Meaning ironically depends as much on the absence of other words as on the presence of cats. So Derrida's chief contribution has been to show how language is fundamentally slippery. Language तो slippery है, self-contradictory है, कोई final meaning नहीं आता, तो unfinalizable conditions हैं of difference and deference. So his arguments have focused on the need to pay closer attention to the way in which meanings are produced temporarily rather than with any finality, through contradictions and ambivalence, and have consistently rebelled against any authoritative or authoritative meaning. So what Derrida achieved with these twin moves, simple hai, meaning as based on difference and absent presences and perpetually deferred, was a radical rethinking of the very process of language use. The writing and language, he announced, was difference, a term that combines difference and deference. एक तो different है और दूसरा meaning postpone हो रहा है. So we shall return to the significance of this term later. All writing is this difference, and a study of this difference is what he termed as grammatology. जो उनका book है of grammatology, उसमें इन्होंने study किया इसको. तो डेरिडा का जो deconstructive turn था, it must be read alongside that of Barthes. As I said, Derrida is the chief deconstructionist, but without Barthes' philosophies, थोड़ा मुश्किल है. What these two thinkers did was to provide a very significant shift in the way we think of language. दोनों ने कहा, endless play of language in literary texts, the unreliability of any meaning, the openness of texts, the instability of language, the unfinalizability of any meaning or text, the relationships between words, meanings, and texts as intrinsic to meaning rather than the words themselves. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपको कोई पूछता डिकंस्ट्रक्शन क्या है, यही है. एंडलेस प्ले है लैंग्वेज में, खेलते रहो, कोई मीनिंग नहीं है, अनरिलायबल है, टेक्स्ट ओपन है, लैंग्वेज इनस्टेबल है, मीनिंग फाइनलाइज नहीं होता, या टेक्स्ट जो वर्ड्स मीनिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज वेरी मच इंट्रिंसिक टू द मीनिंग रादर देन द वर्ड्स देमसेल्व्स. So deconstructive criticism would build on these themes of unfinalizability, deference, relationality to show कि कैसे एक टेक्स्ट अपनी ही stated, मतलब जैसे कोई टेक्स्ट है, वो कोई एक चीज सजेस्ट कर रहा है, जब आप उसको डिकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसका करोगे तो वही टेक्स्ट सबवर्ट कर हो जाएगा और अपनी ही चीजों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, बेसिकली अपनी ही फिलॉसफी को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, because it refers to and is open to a different reading, another text, intertextuality, and revisions even as it states its meanings in unambiguous terms. So deconstruction, if we seek a simple methodology in its practice, is thus interested. अब deconstruction किस चीज में interested है कि कैसे texts break down करते हैं, जैसे हम structuralism में texts के elements को देख रहे थे. अब यहां पे हमने यही देखना है कि कैसे हमने एक टेक्स्ट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढनी है, हमने ब्रेक डाउन करना है टेक्स्ट को, डिफीट देयर स्टेटेड एम्स एंड पर्पसेस, जो भी वो एम और पर्पस अपना बता रहे हैं उसको हमने
डिफीट करना है. Rely on false and unsustainable oppositions. Make use of figurative language even when trying to be empirical, literary, metaphorical language. Reverse their own arguments, depend on other texts or signs, conceal arguments that they are the very opposite of what they ostensibly show. अब आप कैसे कर सकते हो ये? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमें कोई एक पुरानी फिल्म को डीकंस्ट्रक्ट करना है. तो आप एक पुरानी फिल्म कोई भी सोचो, कोई भी फिल्म सोच लो. लेट्स से उसमें दिखा रहे हैं वो कि कैसे वो एक वुमन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको देवी बनाया है, उसको अच्छा सा रिस्पेक्ट मिल रही है, पूज रहे हैं. बट देन जब आप उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन and you find inherent patriarchy even in that. Why? Because aap dekh rahe ho, the men in the society, the men in the film are trying to allow the woman to go out. So ye kaun sa freedom hai if you're allowing somebody? So you are defeating their aims and purposes. You are totally giving the opposite assumption. You're using figurative language, you are reversing their argument. You might depend on other texts. Let's say you might take Virginia Woolf and you apply Virginia Woolf's theory to that film. So this is how you deconstruct a particular कोई भी टेक्स्ट हो, फिल्म हो, किसी भी चीज को आप कर सकते हो. So if structuralism was interested in how meaning is produced and texts work, deconstruction is interested in the contradictions that resist meaning, in how texts do not work but deconstruct themselves. ठीक है, तो ये हो गए. पूरा नहीं हुआ ऑफ कोर्स, ये भी हम डेरिडा का कुछ अभी आएंगे चीजें. चलो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, विल स्टॉप हियर. ठीक है, टेक्सचुअलिटी एंड राइटिंग. अब डीकंस्ट्रक्शन का जो अटेंशन है लैंग्वेज पे, जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है उस पे, इट हैज ऑफन लेड टू एक्यूजेशंस ऑफ इट बीइंग अनदर वर्जन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. आप तो यही कह रहे हो कि ऑथर को मारो गोली और पढ़ लो टेक्स्ट को, है ना? इट्स प्लेफुलनेस एंड puns have sometimes been seen as frivolous, क्योंकि new critics also paid attention, very close attention to the text. Both these charges, however, miss one point. No critical analysis of texts and literary language has been as rigorous as deconstruction in Jacques Derrida, Paul Demand, Geoffrey Hartman and Harold Bloom. ठीक है, कोई भी critical analysis टेक्स्ट की या किसी भी लैंग्वेज की इतनी rigorous नहीं हुई जितनी deconstruction की है. Nicholas Royal proposes that one way of approaching deconstruction is to see how it treats speech acts and language. Ek films is the most latest examples, इसलिए I prefer taking the examples because everybody watches films. I'm sure not everybody reads texts. So how it treats speech acts. Woman का speech कैसा है उसमें, एक man का speech क्या है, कैसा है, writing क्या है. Speech acts को देखो. A constative is an assertion and can be either true or false. A performative is a speech act that performs an act, and the very act of saying, thus I swear or I confess, is a performative because the words I swear or I confess perform the acts of swearing. Performative है, आप कुछ confess कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो इस तरह से जो आप perform कर रहे हो. Anyway, deconstruction shows how every constative, every assertion also includes, चाहे assert कर रहे हो आप, उसमें भी performative act है उसके अंदर. Thus, there is no pure constatives, each being contaminated with the other. Deconstruction's chief strategy has been this: what? To discover impurities, contamination, border crossing that upset purity, structure, linearity, and origins. So in every statement, deconstruction yahi argue karta hai that one can see traces, one can trace elements of other sounds, statements, and truisms. So in every statement, you can see the remainders of something else and detect what else remains to be said. Nothing very important or nothing very
difficult. Okay, so we'll stop here, and in the next session we'll talk about these terms: phonocentrism, logocentrism, metaphysics of presence. We'll talk about the supplement, how writing is a supplement. We'll talk about there is no outside text. Yes, okay, and then we'll go to other deconstructionists. All right, I hope this was clear. And if you haven't seen the previous lectures, please go on to complete them. And you can join the full courses also for UGC NET and UPPSC GDC. UGC NET right now is at a discounted price, which is just 4,500 for the full course, all classes, notes, MCQs. बहुत मेहनत होती है. And also UPPSC GDC is at the least price ever, which is 3,999. So you can join. If you wish to join, details are in the description box. You can get in touch with me. Thank you.